All right, good evening. I will just add something to this so that you guys don't get bored. Wow, jazz. All right, should be live anytime now. So there are two things that we would want to do here. I will just add a few more things. Um, so that's that. And another one is, so I'm setting up my windows so that सब कुछ हमें जब जैसा जहाँ चाहिए वो दिख जाए. All right. Fuck is I? Why does Ninja Trader look like that? I'll close this. Let's see if we can see this. Are we able to see this? I don't think so. Sorry for the background noise. I'm going to improve that. So right now, there are a few analysis that we did. ओके 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमारे पास कुछ नहीं है अभी के लिए. मार्केट 20 मिनट में ओपन होने वाला है. I'll show you something though. So this is a well chart 50k funded account. This is trading day 1 for that, and we are going to get a payout from this. मैंने पहले भी फंडेड अकाउंट्स लिए हैं, मैंने पहले भी फंडेड अकाउंट्स पास किए हैं, पर हमने पे आउट नहीं लिया है अपार्ट फ्रॉम वन अकाउंट दैट वाज इंस्टेंट फंडिंग. सो फ्यूचर्स मार्केट में अभी तक हमने पे आउट नहीं लिया है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू ट्राई टू टेक. दिस इज वेल्थ चार्ट एंड if you see, this is my account. If you see the account section, this is Apex PA, this is paid evaluation. So the balance is, this is the balance that we are starting. Come on. तो अभी तक हमने कोई ट्रेड लिया नहीं है. If you see, nothing, right? All right. So ये देख लिया हमने. चार्ट पे चलते हैं वापस. Excuse me. So on a 15-minute time frame, what I saw is it was making this. It took the liquidity, I guess, and then it is going up. And if it is going up, it will go up only. So my first priority here is to save some capital here and go long here. So I'll do that. Order filled. So I've taken an order on my another futures account, which is a new account that I have to pass. I have taken an entry here with a stop loss at 3028 on the futures market, and a take profit of 3037. I'll just keep it on the 3029 is our stop loss, 3037 is our take profit,
and we are going to hold on to that. So we'll minimize this on this one. So क्या है कि दो तरह की चीज़ें हैं, एक ये जो ट्रेंड लाइन है, इसने ट्रेंड लाइन लिक्विड स्वीप लिया, ऊपर चला गया ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी लेके. अनदर ट्रेंड लाइन वाज दिस. सो अभी टेंशन की क्या बात है कि आपको ये देखना है कि ट्रेंड लाइन में सबसे ज़्यादा टैप्स जहाँ पे होते हैं वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा बेटर होती है. दिस इज 1 2 3 4 5 taps and it failed to go up or to go down. But if this is the trend line that we take, just a moment. If this is the trend line that we take, so we have 3 taps, and on the third tap we took the liquidity and we have straight up short up. So now that we have taken this liquidity and the US market is about to open, we might go up before doing anything else. कभी कभी यूएस मार्केट क्या करता है कि आपको पहले दिखाएगा कि हम ऊपर जा रहे हैं, फिर आप जब ऊपर जा रहे हो तो आप स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले आओ या उसको ड्रैग कर लो ऊपर, वो आपको टैप करेगा, फर्स्ट लेग डाउन दिखाएगा एंड देन इट विल गो अप एंड वाइस वर्सा. सो ऑन द अदर अकाउंट आई हैव टेकन दैट, इस पे आई हैव टू बी श्योर फॉर दी अनदर कैंडल विच इज़ अ 5 मिनट कैंडल. तो ये जो दो हो गए ना यहाँ पे hammers and then more of a doji, this was the disturbing thing for me. Otherwise अगर सीधा इसके बाद ये इस कैंडल को बना रहा होता and if it was higher than this candle the red one, I would have entered here itself. Usually मैंने बहुत बार देखा है इतना बड़े कैंडल बनाने के बाद ये थोड़ा सा ट्रेस करता है पीछे, फिर वापस ऊपर जाता है and it is doing that. So for me this is a good long option. क्योंकि वेल्थ चार्ट मेरे लिए नया है, सो प्लीज़ पार्डन मी कि यहाँ पे अपन वो टूल कैसे लगाते हैं. आई हैव नो आइडिया हाउ टू, वो जो अपना रेशियो टूल लगाते हैं ना, शॉर्ट पोजीशन लॉन्ग पोजीशन, उसका आई डोंट नो हाउ टू डू दैट. ड्राइंग टूल्स नोप, नोप. ड्राइंग टूल्स नोप. मेजरिंग टूल्स नोप. chart and pins and all that. So I don't think we have that here. अगर होगा भी तो I'll have to find it out. 15 मिनट है यूएस मार्केट खुलने में, तो we'll see what can we do about this. All right. Jazz is funny. At least this track is. Also, if you draw a Fibonacci retracement from here, keep it here. We are going to 0.618, which is 3041. Our target for the trade that we have taken is 3037. So well and good. कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ पे. I think I should keep this on display capture so that आपको better दिखा पाऊँ कि क्या बात कर रहा हूँ मैं. So switching this off and giving you display capture. So अब क्या है, सब कुछ समझ में आएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. So हमने क्या किया है, हमने इसको यहाँ से ट्रेस किया है फिबोनाची को, और 0.50 पे इसने एक छोटा सा रिजेक्शन लिया था, नॉट मच. दिस वाज 30434 to 27, 70 पिप्स, गुड इनफ. उसके बाद इसने स्पाइक मारी, फिर नीचे गया, अब ये यहाँ आ रहा है 3040, बिकॉज दिस इज अ रियली ह्यूज वाइड रेंज कैंडल. दिस इज वेयर इट शुड बाउंस बैकवर्ड्स बिफोर गोइंग अपवर्ड्स. बट ये स्पाइक जो है ये थोड़ा परेशानी वाला है, माइट नॉट बाउंस ऑल्सो. बट जो भी है, हमारा टारगेट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, विच इज योर. Our target is 3037.8, just here, and 3037.8 is right here. We are safe here. I can also drag this to 3039.6 to be on the safe side. So we'll just keep it 3039. इसका liquidity अगर टैप करके वापस चला गया तो अपने को दिक्कत होगा, तो we'll wait for it. This is our stop loss last candle के low पे तरह सा नीचे. चलो, this is one trade that you are looking for. अब चलते हैं हमारे प्रिय नास्ताक के पास. तो नास्ताक भाई साहब जो हैं,
यार मैंने जो ड्राइंग की थी वो कहाँ गया? I'll have to get accustomed to this. 279 279। यार मेरी ड्राइंग्स को तुम कहाँ ले गए भाई? और कुछ नहीं चाहिए, बंद कर देना गेट। My target is to make $500 max, minimum $200। so देखते हैं क्या कर सकते हैं अपन। हाँ। I want to see where my chart went, the drawing that I did। भाई साहब क्या मिर्ची है। This is an area of resistance, this is one। Did you go above and tapped at 286 is what you tapped? 293 was this one, right? However, if you see the bigger time frame, it has opened gapped up. Recovery 38.2 is somewhere here, which I'll show you again because my drawing went somewhere, did not want to come up. I'll drag this here till here. All right, this is our 38.2 level। तो इसको अपन इधर ही रखेंगे। दिक्कत क्या है कि इसको जब मैं आई डोंट नो व्हाट दिस इज, एनीवेज अगर इसे 15 मिनट पे ले जाता हूँ तो ये गायब हो जाता है। रीडिंग भी ठीक है यार। So this is gold, tapped up, went up, trying to go down again, which London के बाद न्यूयॉर्क जो पहले मैनिपुलेशन करता है स्टॉप आउट करके फिर निकालता है। तो अगर निकाल भी दिया हमें तो हम फिर एक ट्रेड ले लेंगे उसमें, नॉट अ प्रॉब्लम। दिस इज अ ट्रेंड लाइन दैट इज कमिंग फ्रॉम अप। दिस इज द लंडन जोन, लोज एंड हाइज। हाइज अब यहाँ पे आ गए हैं तो इट डिड नॉट मेक सेंस। दिस हैज ऑलरेडी बीन टैप्ड सो विल डिलीट दिस। This zone makes no sense now. This is the zone that we are interested in if it comes down to that first. All right. So US 100 पे जाते हैं। US 100 गैप अप खुला है, इस पे भी डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस करते हैं। विल डिलीट ऑल दिस। फिर लेते हैं here, here 20282 is our level, that is 200 points away। तो 20 पॉइंट ऊपर नीचे, बट इतना अपने रखते हैं। 1 आवर पे 1 आवर पे 1 आवर पे 1 आवर पे एक टॉप यहाँ पे है जहाँ से अच्छा फॉल आया था। तो दिस इज समथिंग विल हैव टू बी कॉशियस अबाउट, इनिशियली यहाँ से ड्रॉप ना दे दे। सो दिस वाज अ वेरी गुड फॉल। सो यहाँ से जो सेलर्स थे इनको बहुत अच्छा प्रॉफिट था, तो इनको निकाला नहीं गया अभी तक। तो आई एम गोइंग टू मार्क दिस फॉर लिक्विडिटी ग्रैब। द लिक्विडिटी ग्रैब जोन एंड उसके बाद तो कुछ नहीं है, उसके बाद फिर सीधा इधर है। दैट इज फार फेच्ड। देखते हैं तो 15 मिनट पे चलते हैं। 15 मिनट पे भी ये सेम जोन से दिख रहे हैं। आई विल जस्ट मार्क दिस इतना सा सो दैट ये इस लाइन को टैप करते ही नीचे अगर आ गया तो वी नो क्या हो रहा है। छोटा सा यही चल रहा है अभी अपना नीचे, एंड वी आर फिल्ड ऑन आवर स्टॉप, इट इज गोइंग बैक अगेन। So let us wait for the London Open।
Let us wait for the New York Open. I'm sorry. Am I doing everything right? Yes. We'll look at the 5-minute thingy here. I'll keep it in my different screen and I will use two different timelines. We have 15-minute here, and then this is where I would want to see a 2-minute time frame ताकि एंट्री एग्जिट्स जल्दी जल्दी हो पाए. एंट्री नहीं होगी तो विल टेक दिस सिंपल ब्रैकेट पे इसको रखते हैं. टेक प्रॉफिट इज 80 pips, stop loss is 50. I'll keep this actually 114. This makes more sense. All right, ये saved रहता है ना. हाँ चलो रहता है. We should not lose $700 or more in one single trade, and we should make at least $200 today. Hmm. 5 minutes बचे. What don't you change? What do you mean by that? Anyways. Okay. We started buying here. उसके बाद कभी वापस अपने आए नहीं. या यहाँ भी बाय स्टार्ट किए. There's a big ass buy from the London session. Let's see. अब यहाँ पे मेरे लिए डिफिकल्ट है फिबोनाची बनाना. If I take this मतलब एकदम स्टार्टिंग से डे स्टार्टिंग के पंप से और तो अगर ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप लेता भी है तो इट शुड नॉट गो बिलो 20,000 ऑन द इंडाइसेस. एंड हियर just to show you, give you a clear idea, this is where I would want this to be. All right, and I would want to change this, remove this, this. This is our levels जहाँ पे से नीचे जाना नहीं चाहिए. This is a short trade. अगर यहाँ पे आता है तो I am definitely going to take a trade with a 20-point stop loss. Look at what gold is doing. I'll show you what it is doing. See. The trend line broke, it took the liquidity, tried to went up, going back again. Right now creating a double bottom with 3 straight red candles. Let's see if the double bottom sustains. So if there's a 4th red candle, there's a short opportunity there. Market's about to open.
I'm just going to open NQ right here, just in case if you want to take a trade on this one. All right, 27. Forty seconds to market open. Ten seconds. And we're open. We're dropping. Okay, did not like that. Higher high, higher low, higher high, higher low. This is a break of structure, which if it sustains, I'll mark this. Come on. If it breaks and sustains, we can take this trade upwards of here. All right, pushing back up. Break of structure here. What do you mean by zone change? I don't know. Okay, we're seeing a good drop. It has to sustain this for me to sell. Dow just rallied 300 points. Nasdaq should do that too. Just waiting for a candle close. Okay, let it close. All right. It's a good bounce. So what I'm going to do, I'm taking 2 on the evaluation account. Let's see. Keeping this here on the other screen just to manage this. And it's a good buy opportunity, but I'll still wait for this candle to close on my P account.
About to hit stop Stop loss. filled. Okay, stop was filled. Let's see if it is a double bottom bounce. Um, let's see, let's see, let's see, let's see. All right, we are going low. That is a good sell opportunity. However, US is rallying, and I don't want to sell this. I'm going low and low and low and low. That is a good negative candle, to be honest. I'm gonna come here, 195. Is this 195? No. Indecision in the market. Gold is not respecting the double bottom as of now. It's a good sell opportunity, to be honest. I'm going to sell on my eval account. Bad candle. It's a good buying zone. Should buy here. Going to buy here. Should have stop loss के साथ. Yep, I'm buying here. Yep. Sell limit is good. Just wait for it. Let's wait for it. Wait for it. Yep, good. Putting my stop here. Good. Good. Let's go. Let's go. All right. All right. I'll take that. So the minimum was made and the target was filled on this one. Data series. I'll show you what I'm talking about. Marcus entered here, took the take profit here, but the problem is we are on a net average loss because we took an SL before. Gold is dropping. I think this is still has the potential to go up. So I'm gonna go buy it here, keep the SL here. Let's see. Okay, let's see. Yep. अब इससे इस ट्रेड से लाइव अकाउंट के ट्रेड से निकल गए हैं तो वापस ट्रेड में घुसेंगे नहीं इस आसार में कि यार बैठे रहते वो मैंने बहुत कर लिया अब नहीं करना मुझे वो we got a target good points so we got 300 plus on the eval account could have gotten 500 right here but हम निकल गए I'll show you my account यार ये एक तो ड्रैग नहीं होता जस्ट अ मोमेंट अरे क्या है accounts
We are in at $281 per profitable here. तो not bad. ठीक है, चलेगा. Gold is spiking right now. Just went to 3021. I think it took that liquidity and might come up back. एक second.
Cup filled. Order submitted.
So we just tapped our 38.2 levels here, and then we took a good spike up, 10-point spike. We're going down. I am very sure that we are going to touch this. Alright, and I am going to make this, let it be. Let's see if we can. And यहाँ पे MNQ बोल सकते हैं क्या अपने? यार दोनों कैसे चेंज हो गया? Insane, huh? Almost there. Almost there. Order And filled. we tapped that, so I'm going to place a buy here. And no, that should not have been the case. That is Stop the filled. case. As per the Fibonacci retracement, we have not tapped 0.618 yet, and we are bubbling up. एक candle close होने देते हैं. Actually, I'll enter Order a buy filled. here. Looks good to me. Yes, it looks good to me. Two, three, four, five, 6, 7, 8, 5, 6. The problem with big quantities because of the trailing drawdown. ये आपका ये 6 जो दिखा रहा था, so ये भी वो भी ले जाता है. So that was $360 here, and then वो भी ले गया, तो ट्रेलिंग में से वो भी कम हो गया. So that is something which is not good. Let's see. Holding both of them. We have a selling pressure there. I would want my stop loss to be somewhere here actually, if it is going that way. If not, good. So 13 and all right. Stop filled. I think we are going to lose that. Yes, 1,400. We only have 1,000 lagbhag drawdown left in that. So we are going Order and I'm going filled. to take that and keep it here, and I'm going to keep it here somewhere, at least here. Yes, this is what I'm aiming for. अरे यार तुम क्यों change हो रहे हो? तुम्हें what is the problem of yours?
Okay, let's keep it here. Let's bring it to profit area. ये तो थोड़ा सा छेड़ दिया हमने, इसे यहाँ रखते हैं. Right, good 30 points. Some 10 points here. We will not take a loss anymore now. Going to drag this upwards. अब क्या है ना, अगर ये स्पाइक्स को छोड़ दें और इसे पकड़ लें, सिर्फ कैंडल्स को, स्पाइक्स को छोड़ के, तो ये एग्जैक्टली 61.8 से बाउंस कर रहा है. गुड. अरे यार ये क्या है ये? Excuse me. I am going to delete this. ये मूवी नहीं करने दे रहा मेरे को. All right. 35 points. How are we doing here? 14 points. I'm going to keep this right here. I'm going to move this upper. Arey bhai. Yep. Going to move my stop loss here. तो हम जा रहे हैं ऊपर. गुड 20 पॉइंट्स. कुछ तो घर लेके जाते हैं, तो इसे यहाँ रखते हैं. Should we close that? Let's close that automatically. Stop filled. Yep. ऐसे यहीं रहने देते हैं. Keeping your SLs tight is what NQ loves to hunt. अब जितने टाइट रखोगे SL को, NQ उतने बार आएगा उसे टैप करने के लिए. Net 1000 profit to net 140 loss. So just let it run, like we're letting this run. If it gives us like another $30, we'll close it. Like somewhere here, another $15. This should do. I'm going to keep this here. 27, 5, 10 नहीं, यहाँ पे रखना पड़ेगा तब होगा. And we'll keep this here. क्या ही सताते हो. सताती है मगर जागने का नहीं. What?
who did I just say? I'm so sorry. All right. सही जा रहे थे अपन. We bought here. That's 20 points and it was good. देख ही लेते हैं. So that closed. दिखा नहीं हमें जाते हुआ वो वहाँ पे. So if we see this, we made $413 today. Not bad at all. I am going to close this. Don't need this anymore. It's done for the day for me. I'll just keep it here. And NQ is NQing. I think it is straight away going for that level. So I'm going to take a bad trade here. Order filled. Let's see. Could turn good. Could actually turn good. Just wanting 20 pips. Let's see if we can get 20. Actually, not 20 pips, 20 points. 20 points is 80 pips. 0.25 per pip here in Nasdaq. Okay, 15 more to go. गोल्ड तो क्या ही लोअर हाई बनाते बनाते लोअर लो बना रहा है. कभी इधर स्पाइक मार रहा है, कभी उधर स्पाइक मार रहा है. There's no reason for you to go down, to be honest. It's a good market. We have a news where we might expect, and we are expecting Trump to soften their policies. Dow is up 400 points. Nasdaq was up pre-market, London session, Asian session. अब ये नीचे जाने का तो मुझे सेंस नहीं लग रहा है. We'll just have to wait. Good upward spike. Okay. बहुत बार ये जो स्पाइक आप ऊपर जाता है गोल्ड में यूजुअली, तो ये लिक्विडिटी ग्रैब करता है और ये सीधा नीचे चला जाता है. बहुत बार ऐसा होता है. तो अगर बाइंग आ रही है तो बाइंग आ रही है. पीपल आर वांटिंग टू सेल, पीपल आर वांटिंग टू बुक प्रॉफिट्स. एंड देन देयर आर सेलर्स जिनका स्टॉप लॉस हम यहाँ खाए हैं अभी. एक्चुअली यहीं खा लिया था हमने स्टॉप लॉस उनका. तो उसके बाद हम यहाँ गए थे, बट फिर वापस जा रहे हैं. अब यहाँ से नीचे जाने का कोई सेंस नहीं बनता है. I mean 350 is our minimum target. 375 is something that we are hoping for, but इतना तो जाए पहले. I think I receive like 100 calls a day from different people. कभी कभी थक जाता हूँ मैं यार. कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो. अभी कोई और फ़ोन कर रहा है, कभी कोई मैसेज कर रहा है,
कभी कोई गलत नंबर लगा रहे हैं। Sometimes I really want to change my number, but then प्राइमरी नंबर इतने जगह से और इतने टाइम से है ना कि सेंस नहीं बनता नंबर चेंज करने का। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट हैपेंस इज आप मैंने फुल डीएनडी एक्टिवेट करके रखा है। Does not bother them, does not bother the credit card companies, does not bother the loan companies, does not bother vacation companies, does not bother the people who are wanting to sell things. There are people who want to sell me stock market का courses, people who want to tip me कि क्या खरीदना चाहिए तो मैं लखपति से करोड़पति बन जाऊंगा। ये सब होता है without a single point of shame it happens. So yeah, DND नो प्रॉब्लम, आप करते रहो कितना डीएनडी करना है, बट हम तो भाई करेंगे वैसा है। 10 more points to go. Seven more points to go. Five more points to go. I'll keep this at here. मतलब अब तो फिर अकाउंट ही चला जाएगा अगर उतना भी ना रखे तो अपना। And I would want to increase this actually 10 more points. Let's see, we can do this. Let's see. Actually, I'll keep this here now. अगर क्लोजिंग ऊपर दिया तो ये नीचे नहीं मारेगा, नहीं तो ये अगला कैंडल में ही स्टॉप लॉस मार देगा। भाई यार ये विक क्यों बनाता है ये? Stop filled. तो ऑल इन ऑल वी आर 225 अप। द प्रॉब्लम विद दिस फ्यूचर्स अकाउंट इज आपको यहाँ पे ना आपका ड्रॉ डाउन लिमिट नहीं दिखता। सो इफ यू आई मीन यू लुक एट दिस कैश वैल्यू ऑल ऑफ दैट नेट लिक्विडेशन इज 50127। तो $225 हमने भले कमाए हैं, बट हमने जो ट्रांजैक्शंस किए हैं और जो टैक्सेस लगा है उसके कारण वी आर ओनली $127, विच इज़ फाइन। प्रॉब्लम हियर इज अपने ड्रॉ डाउन बैलेंस कितना लेफ्ट है उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी यहाँ पे चेक नहीं कर पाते कि इतना ले सकते हैं अभी भी अपन। तो इसने ये किया, बट या अब इससे ज़्यादा अभी मैं करूँगा तो आई लूज़ मनी, आई लूज़ अकाउंट्स, आई डोंट वांट टू डू दैट। आई हैव ऑलरेडी क्लोज्ड माय पेड अकाउंट, गोइंग टू क्लोज दिस टुडे। हैव अ वेरी गुड नाइट, आई विल सी यू गाइस टुमारो, होपफुली आई विल गेट बेटर एवरी डे।